Hello everyone, this question appears in class 7th NCERT chapter of lines and angles. This is 6th question of its exercise 5.2. So the question says that in the given figure below, decide whether L is parallel to M. So in first, here 44 plus ये हो जाएगा हमारे पास, इन दोनों एंगल का सम कर लेंगे हम. 44 plus 126 is equal to, ये हो जाएगा हमारे पास 170 डिग्री. सो ये हमारे पास इंटीरियर एंगल्स है. सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल is not equal to 180. So L is not parallel to M. सेकेंड, ये 75 है, देन ये भी हमारे पास हो जाएगा 75 वर्टिकली अपोजिट. सो 75 प्लस 75 इज इक्वल टू 150. ये भी 180 के इक्वल नहीं है. सो L is not parallel to M. Then third, here 123, so ये 57 है, so ये भी हो जाएगा हमारे पास 57 vertically opposite. So sum of 123 plus 57 is equal to 180. So ये हमारे पास इंटीरियर एंगल से इन दोनों का सम 180 है. So L is L parallel to M. Then in fourth, here 98, so ये 72 है, so ये भी हो जाएगा हमारे पास 72 vertically opposite. So 98 plus 72 is equal to 170, not equal to 180. So L is not parallel to M. So ओनली थर्ड ऑप्शन में हमारे पास सम 180 है इंटीरियर एंगल्स का. सो L parallel to M in only option third. Thank you.